Hello everyone, I am Prakhar Kumar and today I'm going to recite a poem. I was reminded of this poem recently because I was teaching in my school and this suddenly struck me. This poem was written back in 2019 and it suddenly struck me that we keep on studying, that the books are being changed, the curriculum is being changed, there is political intervention in the academia, a whole generation is being mind washed to become less knowledgeable about the real history. There is removal of chapters, there is changing of lines of paragraphs, there is deletion, there is uh, substitution of topics. So most of the times we don't feel the effects. But I started feeling the effects when I actually teach now. When you are in a classroom and when you see the difference, the topic that you were teaching 2 years ago is no more in the book. It's not even mentioned. It's not even given as as an extra topic. It has been completely removed. Let's take an example. The topic of Mughals. The political history of Mughals has been completely removed from grade 12th new edition of the NCERT. Just last year, I was teaching Mughals to my students, and this notification was in the air that this chapter is going to be removed. And now when I'm teaching, that chapter has gone. So when you are actually in the classroom, you can feel what difference it is going to create within the mind of students. बाहर अक्सर हम चीजों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, न्यूज में आती हैं बातें, लेकिन उनसे ना एक्चुअल सिनेरियो पता नहीं चल पाता कि बच्चों के दिमाग को किस तरह से बदला जा रहा है इंस्टीट्यूशनली. अगर क्लासरूम रिलेटेड बात है तो वो क्लासरूम में रहकर उस टॉपिक को डील करके ही आप उस चेंज को आप फील कर सकते हैं. तो रिसेंटली वही हुआ मेरे साथ. ऑल ऑफ अ सडन आई वाज रिमाइंडेड ऑफ दिस पोएम. इट वाज इन 2019. I wrote it and it became so relevant that now I thought of reciting it and making a video of this poem. So I've tried to convert this in English. It was originally written in Hindi. I've translated it in English also, and the poem is about the upcoming books. इसका नाम है आने वाली किताबें. पहले हिंदी में सुन लेते हैं, फिर इंग्लिश में. आने वाली किताबें हमें बचानी होंगी वे सभी किताबें जिन्होंने लिखा नरसंहार को पाप, खून को संघर्ष, कुल्हाड़ी को हत्यारा और जंगल को उपनिवेश. उपनिवेश मीन्स a colonial place. Colonialism means औपनिवेशिकता. उपनिवेश means basically colony. हमें बचानी होंगी वे सभी किताबें जिन्होंने लिखा नरसंहार को पाप, खून को संघर्ष, कुल्हाड़ी को हत्यारा और जंगल को उपनिवेश. आने वाली किताबों के पन्ने बदले होंगे बड़ी चालाकी से. आने वाली किताबों के पन्ने बदले होंगे बड़ी चालाकी से, जिनके किस्सों में गहरे मित्र होंगे कुल्हाड़ी और टहनी. जिनके किस्सों में गहरे मित्र होंगे कुल्हाड़ी और टहनी, जिनमें पहाड़ों की लूट को उपमा दी जाएगी उन्नति की, तथा सारे जबरा पहाड़िया कहलाएंगे सभ्यता के दुश्मन. So this Jabra Pahadia is the name of Tilka Manjhi, the first fighter of one of the mountains. He led the movement in Jharkhand, and he fought back with the British back in 1780s. I mean, much before the freedom movement of India actually started. So he resisted.
So I mean, in some of the books, he is mentioned as the first freedom fighter of India. Although the term freedom fighter is not correct there, but yeah, he was the first one to resist the British. So आने वाली किताबों के पन्ने बदले होंगे बड़ी चालाकी से, जिनके किस्सों में गहरे मित्र होंगे कुल्हाड़ी और टहनी, जिनमें पहाड़ों की लूट को उपमा दी जाएगी उन्नति की, तथा सारे जबरा पहाड़िया कहलाएंगे सभ्यता के दुश्मन। आने वाली किताबें नरसंहार को कहेंगी सेवा, और खून को सेवा की छोटी सी कीमत। कि भाई तुम तो देश के लिए लड़ रहे हो, हिंदुओं के लिए लड़ो, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ो, और लड़ते हुए शहीद हो जाओ, और ये देश की उन्नति के लिए छोटी सी कीमत, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तुम जो कर रहे हो वो देश के लिए सेवा है, नरसंहार जो है ये देश की सेवा है, और इसमें खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं। सो आने वाली किताबें नरसंहार को कहेंगी सेवा, और खून को सेवा की छोटी सी कीमत। सभ्यता कहलाएगी संस्कृतिवाद, गुलाम कहलाएंगे पूजनीय, और वर्दी होगी देश। सभ्यता कहलाएगी संस्कृतिवाद, गुलाम कहलाएंगे पूजनीय, और वर्दी होगी देश। उन किताबों में भूखा कल कहलाएगा स्वर्णिम काल। कि भाई आज से 2500 साल पहले हम बड़े अच्छे हुआ करते थे, अब बहुत बुरे हो गए हैं। हमारा अब ना कलयुग आ गया है, इंसान अब बहुत बेकार हो गया है। 2500 साल पहले हम बहुत अच्छे थे, जब हम भूखमरी में जीते थे, जब हमारे पास बीमारियों का इलाज नहीं था, जब हम किसी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर नहीं रहते थे। पॉलिटिकल सिस्टम था भी तो वो ऑप्रेसिव था, जहां पे राजा की जो मनमानी आती थी वो करता था, प्रजा भूखों मरती थी, प्रजा से सिर्फ और सिर्फ टैक्स वसूला जाता था। हम 2500 साल पहले बहुत अच्छे थे, अभी बहुत बुरे हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है जिंदगी में, तो 2500 साल पहले वाला सिस्टम वापस लाना हो, स्वर्णिम काल वापस लाना हो। अभी तो कोयले का काल है, अभी कुछ स्वर्णिम नहीं। तो इन उन किताबों में भूखा कल कहलाएगा स्वर्णिम काल, तथा दावा वापस लाने का स्वर्णिम काल को कहलाएगा धर्म। यही आपका धर्म है, इसी के लिए संघर्ष करो, इसी के लिए खून बहाओ। दावे को पूरा करेंगे लुटेरों के नहीं, बल्कि रक्षकों के पाले गए कुछ प्रतिभावान युवा, जो खुद को बताएंगे शांति दूत, बस्ती में आग लगाने की ठीक बात। जो खुद को बताएंगे शांति दूत, बस्ती में आग लगाने के ठीक बात। आने वाली किताबों में एक अंधेर नगरी में बीच सड़क पर झुककर नफरत की बंदूक के सामने जिंदगी की भीख मांगेंगे करुणा, सौहार्द, सहिष्णुता और प्रेम। आने वाली किताबों में एक अंधेर नगरी में बीच सड़क पर झुककर नफरत की बंदूक के सामने जिंदगी की भीख मांगेंगे करुणा, सौहार्द, सहिष्णुता और प्रेम। हमें बचानी होंगी वे सभी किताबें जिन्होंने लिखा नरसंहार को पाप, खून को संघर्ष, कुल्हाड़ी को हत्यारा और जंगल को उपनिवेश। This was in Hindi. In English, it is called the upcoming books. We will have to save all those books which presented genocide as crime, blood as struggle, spears as murderers, and forests as colonies. We will have to save all those books which presented genocide as crime, blood as struggle, spears as murderers, and forests as colonies. The contents of the upcoming books will be altered very meticulously. The contents of the upcoming books will be altered very meticulously, in the stories of which axes and branches of trees will be the best of friends. In the stories of which the axes and the branches of trees will be the best of friends. In the stories of which the loot of the mountains will be termed as development, and all the crusaders of anti-colonialism in these mountains will be declared the enemies of civilization. अगर आप औपनिवेशिकता के खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर आप कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आप सभ्यता के दुश्मन हैं, आप प्रगति के खिलाफ हैं, आप देशद्रोही हैं, आपको देश छोड़ के चले जाना चाहिए। You are the enemy of the civilization. The upcoming books will portray genocide as a service to humanity and blood as a negligible cost for this great service. The upcoming books will portray genocide as a service to humanity
and blood as a negligible cost for this great service. Civilizations will be a mere reflection of a certain culture. Civilizations will be a mere reflection of a certain culture. Slaves will be called divine beings, and uniform will become the nation. Vardi hogi desh. In those books, ancient ages of hunger and deprivation will become golden. In those books, the ancient ages of hunger and deprivation will become golden, and the promise to bring back the golden age will become sole religion. The promise will be fulfilled by some talented youngsters employed to safeguard the divinity, who will declare themselves the Messiah of peace, who will declare themselves the Messiah of peace just after burning the colonies of innocence. In the upcoming books, the mid-crossroads of some tormented cities will witness love, tolerance, compassion, and harmony bent helplessly before the gun of hatred and beg for mercy and life. In the upcoming books, the mid-crossroads of some tormented cities will witness love, tolerance, compassion, and harmony bent helplessly before the gun of hatred, and beg for the mercy and life. So this was the poem. All of a sudden, it became so relevant. This is the second time I'm teaching grade 12th, and last time I taught Mughals. This time I'm not teaching Mughals. It's very weird. It's a very weird feeling for me. So I don't know what to say more, because this is sad. This is pathetic. The way the whole curriculum is changed, almost the whole curriculum is changed. They are intervening in the science book. They are intervening in the social science books. हर किस्म के साइंटिफिक डिस्कशन को किल करने की कोशिश है, हर किस्म के साइंटिफिक स्पिरिट को मार देने की कोशिश है, एक किस्म का एक अंधापन फॉलो कराने की बात है, एक किस्म का बिलीफ सिस्टम क्रिएट करने की बात है, जिसका कोई लॉजिकल बेसिस नहीं है, जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, बस हवा हवा में बातें हैं, और जैसे मर्जी आए वैसे पैराग्राफ चेंज कर दिए जा रहे हैं, जैसे मर्जी आए वैसे चैप्टर्स हटा दिए जा रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे बस करिकुलम का डिजाइन हो रहा है, और वो उसी को बेसिस बनाकर ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और इनफैक्ट हो भी चुका है। मुझे जहां तक लगता है एक पूरी जनरेशन 2014 से लेकर 2022 तक एक पूरी जनरेशन है जो कि लगभग वाइप्ड आउट हो चुकी है, जिनका वॉश आउट हो चुका है दिमाग का, और अब दोबारा से ऐसा लगता है कि फिर से वो रैशनैलिटी क्रिएट करना नामुमकिन तो नहीं है, बट काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि 4-5 साल पहले तक मुझे दिखता था कि कुछ दो सेट के लोग हैं जो एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, तो ये जो चैलेंज करने वाला सेट था उनके नंबर धीरे धीरे घटती जा रही है, और ये जो अनचैलेंज सेट है जो कि डोमिनेंट हो चुका है वो बिल्कुल अपने जेनिथ पे है, बिल्कुल अपने उरूज पर है। तो बड़ा मुश्किल है, और पता नहीं अब कैसे पीपल ऑफ इंडिया आर गोइंग टू डील विद इट। लेट्स हैव सम फेथ इन द पीपल ऑफ इंडिया। लेट्स you know hope they come up with a better option, at least in the upcoming elections 2024. Let's see. Thank you so much.